Hello everyone, welcome to this class. आज हमें यही क्लास रे RI AMIN SFS and ICDS supervisor रा prelim exam पाई mock test 2 practice करिबा 100 questions 100 marks. Each section रे आपनकर 20 questions रहिछि ओडिया जीके reasoning English and math रो आपनकर 20 questions रहिछि. Out of 100 आपनकर स्कोर केते रहउछि आपन देखि परिबे एवं आपण एही PDF नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रु डाउनलोड करि परिबे. ओके, आरंभ करिबा. चलंतु क्वेश्चन नंबर 1 ओडिया रो प्रश्न रहिछि. मयूर शब्दर समार्थबोधक शब्दटी कोन? मयूर शब्दर समार्थबोधक शब्दटी कोन हबो कहंतु? ऑप्शन ए रे रहिछि वित्त. वित्तर अर्थ कोन? संपत्ति, धन. ठीक अछि, उद्धर हेबो नाही. ऑप्शन सी कलापी इज योर राइट आंसर. मयूर शब्दर समार्थबोधक शब्दटी होछि कलापी. ठीक अछि, कलापी इज योर राइट आंसर. ऑप्शन डी आंसर कटिबो. मारुत माने कोन? वायु पवन अर्थ रे आसीबो मारुत. ऑप्शन सी समस्त चूज करछंती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ब्रह्मार स्त्रीलिंग कोन हबो कहंतु? ब्रह्मार स्त्रीलिंग ब्राह्मणी, ब्रह्मात्री. ऑप्शन सी होची ब्रह्मपत्नी एंड ऑप्शन डी होची ब्रह्माणी. व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर? ब्रह्मार स्त्रीलिंग कोन होइजिबो? समस्त ट्राई करले. व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन डी ब्रह्माणी इज योर राइट आंसर. ब्रह्मा ब्रह्माणी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. आरिसा की प्रकार शब्द कहंतु? आरिसा एक की प्रकार शब्द? आरिसा होची एक देशज शब्द. आरिसा केउ प्रकार शब्द? देशज शब्द अटे. नेक्स्ट, संधेई शब्दर विपरीत शब्द कोन हेबो? संधेई शब्दर विपरीत शब्द कोन हेजिबो? सरल किंबा अकृत्रिम हेबो नाही. देन कहंतु ऑप्शन सी रहला निसंदेह एंड ऑप्शन डी निसंदेही. संधेई रो विपरीत शब्द कह जायछि. विपरीत शब्द. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. निसंदेह हेबो यार राइट आंसर. ठीक अछि. नेक्स्ट, हर्ष शब्दर विपरीत शब्द कोन हबो? हर्ष शब्दर विपरीत शब्द कोन हिजबो? हर्षर विषाद. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. विषाद मन रखंतु. नेक्स्ट, ठीक जोगरे केउ विभक्ति हुए? ठीक जोगरे केउ विभक्ति होबो? ठीक जोगरे द्वितीय विभक्ति हुए. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. निम्ब प्रकृति रे पिता. वाक्य रे थिबा प्रकृति रे केउ विभक्ति? वाक्य रे थिबा प्रकृति रे केउ विभक्ति होइबो? निम्ब प्रकृति रे पिता. वाक्य रे थिबा प्रकृति रे होइबो तृतीय विभक्ति. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मशा को धुआं दियो. वाक्य रे थिबा मशा को केउ विभक्ति? मशा को काहा को? मशा को अर्थ रे कोहा गला तो यह होइबो आपनकर चतुर्थी विभक्ति. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, ठीक शब्दटी चिन्हाई दियो. निम्नलिखित मध्यरु ठीक शब्दटी बाछिबा. अपौरुषेय. अपौरुषेय. ठीक अछि. एठारे हर्षौकार अछि एवं एठारे दीर्घौकार अछि. अपुरुषेय, अपौरुषेय. व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर? ठीक शब्दटी केउटा हिजबो? ऑप्शन ए अपौरुषेय हेबो यार राइट आंसर. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट, ना करिबा रूढिटीर केउ अर्थ ठीक? ना करिबा एही रूढिटीर ठीक अर्थ कोन आसीबो? ना करिबा अर्थ होउची सुनाम अर्जिबा. सुनाम अर्जिबा. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फटई हेबा रूढिटीर केउ अर्थ ठीक? फटई हेबा अर्थ होउची गोटे कथा को बारंबार कहिबा. ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर. फटई हेबा गोटे कथा को बारंबार कहिबा. नेक्स्ट, बालक बालिका केउ समास हेबो? बालक ओ बालिका. बालक बालिका. ठीक अछि. तो यह हो जो एक
द्वंद्व समास ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट रात्रि शब्दर समार्थबोधक शब्दटी कौन हम कहतु रात्रि रात्रि कौन हो नग हेब ना ठीक अच्छे नग पहाड़ पर्वत अद्री हेब ना यहाँ कौन जहाँ तीर बा से पहाड़ अर्थ आसीज ऑप्शन सी हबनी मातग हबनी विभा बरी हो राइट आंसर रात्रि कौन हो विभा बरी रजनी हो यार समार्थबोधक शब्द नेक्स्ट ठीक शब्दटी चिन्ह दियो अपरिवर्तन अपरिवर्तनीय 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 which option is your right answer अपरिवर्तनीय option B is your right answer अपरिवर्तनीय next प्रतिमूर्ति क्यों समास हो प्रतिमूर्ति हो एक अवयभाव समास ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर यूज करछन्ती समस्त नेक्स्ट ठीक शब्दटी चिन्ह दियो अन्न प्रासन्न अन्नः प्रासन्न अंतः प्रासन्न अन्नप्रासन्न अन्नप्रासन्न व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर अन्नप्रासन्न माने शिशुर प्रथम खाद्य ग्रहण उत्सवटा आम कहीपर शिशुर प्रथम खाद्य ग्रहण को अन्नप्रासन्न कहुए ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर अन्नप्रासन्न ठीक अच्छे यहाँ तालव्य शब्द नेक्स्ट धर्म की प्रकार शब्द धर्म हूँ एक तत्सम शब्द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बंधुर शब्दर विपरीत शब्द कौन है कहतु बंधुर शब्दर विपरीत शब्द कौन हो बंधुर शब्दर विपरीत शब्द हूँ मसृण ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट अल्प वयस्क क्यों समास है अल्प वयस्क क्यों समास हो अल्प वयस्क हूँ एक बहुव्रीहि समास ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट पिठिरे पड़िबा रूढ़ीटीर क्यों अर्थ ठीक पिठिरे पड़िबा एही रूढ़ीटी क्यों अर्थ रे ठीक हम पिठिरे पड़िबा अर्थ होउची साहा हेबा कौन साहा हेबा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ओके देन जिबा हमें इंग्लिश रो क्वेश्चन रही ट्राई करबा क्वेश्चन नंबर 21 I like both tea and coffee but prefer the taste letter least last letter habo which option is your right answer I like both tea and coffee दुईटा प्रेफरेंस को गला एटा होची फर्स्ट प्रेफरेंस दैट इज सेकंड प्रेफरेंस बट प्रिफर करूची द लेटर माने सेकंड को लेटर इज योर राइट आंसर LATTER ओके नेक्स्ट क्वेश्चन being a millionaire he is leading a dash life expensive conducive then option C रहला destitute and luxurious being a millionaire से जने millionaire अटंती millionaire भाबरे he is leading a luxurious life विलासपूर्ण जीवन यापन करंती luxurious life our right answer next she was loved by her employees for her कौन सीटा that is benevolence माने दया kind से बहुत kind person अटंती benevolence our right answer next the speaker dash the audience with the fine speech the speaker dash the audience with the fine speech the speaker impressed what impressed the audience with the fine speech his new job is connected dash developing software for teaching connected सहित always fixed preposition आसीबो आपनकर with connected with is your right answer option D next question it is not safe for children to dash on the road टू आसिला माने कोन आसीबो या पर आपण इंफिनिटिव यूज करिवे verb रो फर्स्ट फॉर्म टू प्ले होवर राइट आंसर इंफिनिटिव next question after 3 months of practice I dash now swim quite fast I can माने ability sense रे present रो ability sense रे we can use option C is your right answer next question
Educators have this unique responsibility towards the empowerment of their students. देखो unique आसिला इठी आपण कौन अच्छी गोटे वॉयल्स अच्छी दैट्स व्हाई आपण एन यूज करबे नो यार साउंड कौन यार साउंड को ऑलवेज प्रायोरिटी देबे साउंड को कंसीडर करिवे वॉयल्स और कॉन्सोनेंट यूनिक दैट इज कौन कॉन्सोनेंट और साउंड आसी दैट्स व्हाई ए यूनिक हबो एठारे राइट आंसर ऑप्शन बी only days girls were present in the class today एठारे कौन अच्छी गर्ल्स अच्छी दैट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन अटे राइट ताले कोंतु many, a lot of, several and a few. Which option is your right answer? Were present in the class today माने कौन सेंटेंस टा पॉजिटिव सेंस रे अछि तो एठी आपण नंबर गोटे प्लूरल काउंटेबल नाउन सेंस रे a few को यूज करा जाय परिबो a few only a few girls were present in the class today is your right answer. Next question. This is the reason days I don't attend parties. This is the reason से तो कौन यूज होगा why. This is the reason why I don't attend party. Option A is your right answer. Next. The correctly spelled word को choose करंतु. Okay. Recruitment, surveillance, bureaucracy, reimbursement ठीक अछि. REIMBURSEMENT. That is correctly spelled word. Reimbursement. Next. Correctly spelled word को choose करिवा definite option A रे ठीक अछि DEFINITE definite is your right answer. Next correctly spelled word को choose करंतु commemorate option A COMMEMORATE commemorate. Next question correctly spelled word sovereignty ठीक है देखो ऑप्शन बी SOVEREIGNY sovereignty. Next question obligatory रो synonym कोन हबो obligatory माने जोटा mandatory synonym similar meaning mandatory is your right answer. Next pathetic रो synonym कोन है pathetic that is pitiful is your right answer. Next question prevent रो synonym prevent means that is not allowed avoid करिवा sense prevent करिवा avoid करिवा is your synonym. Next Mohan did not went to school yesterday as he was unwell. एही सेंटेंस रे केउ पार्ट रे एरर अछि ट्राई करंतु. प्रथम कथा कोंतु मते ई सेंटेंस टी केउ टेंस रे अछि. ई सेंटेंस टी आपनकर टेंस कोन अछि दैट इज पास्ट रो सिंपल टेंस रे अछि नो डाउट. ओके स्ट्रक्चर कोन सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट. यदि सेंटेंस को आपण नेगेटिव करिवे किबा क्वेश्चन करिवे जेतु एठारे नेगेटिव फॉर्म रे अछि सब्जेक्ट आसीबो देन यहाँ पर कोन आसीबो did आसीबो प्लस नॉट आसीबो देन वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म आसीबो देन ऑब्जेक्ट आसीबो दैट इज पास्ट सिंपल टेंस रो स्ट्रक्चर. देन देखंतु मोहन डिड नॉट वेंट अछि तो एठारे कोन अछि वेंट आसी जाइछि दैट्स व्हाई रॉन्ग अछि. मोहन डिड नॉट गो हबो verb रो फर्स्ट फॉर्म आसीबो मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday as he was unwell. It means option A पार्ट रे ही थिला एरर एठारे went हबो नाही go हेबो हेरो राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन we must get this post send as soon as possible. ट्राई करंतु ए सेंटेंस रे कोन पार्ट रे एरर अछि. we know जत्ते बेले भी आपनकर मॉडल वर्ब आसीबो देन यहाँ पर आपण वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म यूज करिवे. अदरवाइज आपनकर मॉडल वर्ब आसीबो देन बी वर्ब जदी यूज हबो दैट इज आपण कोन वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म और वर्ब रो थर्ड फॉर्म आपण यूज करंती जेमिति मॉडल वर्ब सहित आपनकर हैव आसे देन आल्सो आपण वर्ब रो थर्ड फॉर्म यूज करंती. देन देखंतु मस्ट आसिला वी मस्ट देन गेट आसिला देन ए गेट आसीबा परे एठारे आपण कोन यूज करिवे वर्ब वन मो सेंट यूज कराबे sent right we must get this post sent as soon as possible. It means option D part with error send as no send as of error right answer. Next
Sita has no test in classical dance. क्यों पार्ट रे एरर अछि? Sita has no test in classical dance. देखंतु Sita has no test for हबो एठारे कोन हबो for test for एठारे appropriate लागुछि means option B part रे थिला एरर. No test in no test for classical dance हबो right answer. Okay, English रो 20 questions हल्ला then जिबा हमें GK रो 20 questions रहिछि try करिबा. Okay, which of the following is an organic rock? Marble, coal, granite, slate. Which option is your right answer? गोटे organic rock निम्नोक्त मध्यरु केउटा अटे? Organic rock कथा कुआ जाउछि कोइला is your right answer. Option B coal is your right answer. Next, the most abundant element in the earth's atmosphere. ठीक अछि पृथ्वीर वायुमंडल रे थिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटा abundant element अटे प्रचुर परिमाण रे केउ मौलिकटी रहिछि that is आपनकर नाइट्रोजन. Option B is your right answer. Next, marble is a metamorphic rock of marble गोटे metamorphic rock अटे that is limestone. Limestone is your right answer. मन रखंतु एमिति प्रश्न परीक्षा रे previous year रे थिला. The mountain which separates Asia and Europe is एशिया एवं यूरोप को क्यों माउंटेन सेपरेट करूछि क्यों माउंटेन दैट इज यूरल माउंटेन मन रखिबा एशिया एवं यूरोप को. नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज वर्ल्ड थिबा लार्जेस्ट आइलैंड कोन हिजो माडागास्कर. ऑप्शन डी इज योर रॉन्ग आंसर. ऑप्शन ए ग्रीनलैंड होछि वर्ल्ड रो लार्जेस्ट आइलैंड. ओके, नेक्स्ट, which is the biggest coffee producing country in the world? World ro biggest coffee producing country होछि ब्राजील. क्यों कंट्री? ब्राजील रे अधिक कॉफी उत्पादन हुए. नेक्स्ट, which is the biggest gulf of the world? World ro biggest gulf होछि गल्फ ऑफ मेक्सिको. ऑप्शन ए गल्फ ऑफ मेक्सिको मन रखंतु. Ring of fire is found commonly in ring of fire आपण basically Pacific Ocean रे देखबा पई पाइबे. क्यों ओशियन? Pacific Ocean. Next, who lead the salt सत्याग्रह movement with गांधी? ट्राई करंतु ऑप्शंस अनुसार गांधी को सहित लवण सत्याग्रह रे ओके लवण सत्याग्रह जो होइतिला से आंदोलन रो किए नेतृत्व निथिले? गांधी को सहित किए नेतृत्व निथिले? सरोजिनी नायडू. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सती वाज प्रोहिबिटेड बाय सती प्रथा को उच्छेद करा जायतिला कहा द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को द्वारा. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? प्रथम भारतीय जी की ब्रिटिश पार्लियामेंट को इलेक्ट होइथिले से होचंदी दादा भाई नारोजी. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. दादा भाई नारोजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा राशि पारे. कॉन्स्टिट्यूशन डे को भारत रे 26 नवंबर को सेलिब्रेट करा जाए. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. How many times has the preamble of the Indian Constitution been amended? संशोधन one time. Option C is your right answer. Next question, Indian citizenship is granted by भारतर जो नागरिकत्व रही ग्रांट करा जाउची. ठीक अछि अनुमोदन करा जो का द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय द्वारा. ठीक अछि गृह मंत्रालय. नेक्स्ट, in which of the following articles there is provision of right to equality? right to equality विषय रे एटा क्यों आर्टिकल्स रे वर्णना करा जायछि? आर्टिकल 14 of the Indian Constitution fundamental rights रे. ऑप्शन ए हबो राइट आंसर. rent is a factor payment paid to rent गोटे पेमेंट that is paid to land पई दिया जाय. land is your right answer. next question, who composed गीता गोविंद? गीता गोविंद को किए रचना करथिले? जयदेव रचना करथिले. ऑप्शन बी जयदेव इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चौहान्स डायनेस्टी?
चौहान डायनेस्टी रो शेष शासक किए थिले मुकुंद देव थिले ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु एस्टाब्लिश्ड अलका आश्रम को किए प्रतिष्ठा करथिले हरे कृष्ण महाताब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which place was the first place where salt satyagraha was launched salt satyagraha को जब हम ओडिशा परिप्रेक्षी रे कथा हबा बालेश्वर थिला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ओके बालेश्वर इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 61 आपनकर रीजनिंग रो प्रश्न रहिछि ट्राई करबा क्लियर देखंतु ब्लड रिलेशन रो प्रश्न ट्राई करंतु व्हिच ऑप्शन आसीबो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 प्रश्न कोन कहूछि ए इज देन ब्लड रिलेशन रो क्वेश्चन जेतेले हम करूछंती मो एठारे आपन को रिप्रेजेंट करेबी मेल को रिप्रेजेंट करेबी ट्रायंगल रे ओके एंड फीमेल को रिप्रेजेंट करेबी दैट इज सर्कल रे आपन प्लस माइनस भी नहीं पारंती A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother. How D is related to A? आराम से करिवा A is B's daughter. B रो daughter किए B रो daughter होची A माने कोन A होची daughter female. B is C's mother. B कोन C रो मां B होची C रो मां माने B होची female. D is C's brother. C रो भाई किए D D होची C रो भाई ताले B होची मदर A C D समानकर चिल्ड्रन ओके माने मदर रो B रो चिल्ड्रन हाउ D इज रिलेटेड टू A D A को कोन हबो D A को कोन हिजबो ब्रदर हिजबो ठीक अछि D A रो ब्रदर ऑप्शन 3 ब्रदर इज योर राइट आंसर बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 अगेन ब्लड रिलेशन रो क्वेश्चन Rajiv is the brother of Atul. Sonia is the sister of Sunil. Atul is the son of Sonia. How is Rajiv related to Sonia? Rajiv is the brother of Atul. Rajiv रो भाई किए अतुल ठीक अछि राजीव रो भाई होची किए अतुल सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील सोनिया होची सुनील रो सिस्टर सोनिया होची सुनील रो सिस्टर अतुल इज द सन ऑफ सोनिया देखंतु सोनिया होची सुनील रो सिस्टर एंड अतुल कहगला अतुल होची सोनिया रो पुओ अतुल होची सोनिया रो पुओ एवं अतुल रो भाई होची कोन राजीव अतुल रो भाई होची राजीव ताहले हाउ राजीव इज रिलेटेड टू सोनिया राजीव सोनिया को कोन हिजबो पुओ होइजबो ऑप्शन 2 सन इज योर राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 ट्राई करबा एठी को गला प्लस मींस माइनस प्लस रो अर्थ होची माइनस माइनस मींस मल्टीप्लिकेशन माइनस रो अर्थ कोन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मींस प्लस डिवीजन रो अर्थ होची प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन मींस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मींस डिवीजन ताले 15 minus means multiplication 15 multiplication 3 plus means minus minus 10 multiplication means division division 5 and division means plus plus 5 ठीक अछि देन एटा सॉल्व करंतु पद्मास रूल बरह भूमिफे अनुसार एटा केता आसीबो आपनकर 15 गुणन 3 45 माइनस 10 हरण 5 दैट इज केता आसीबो 10 हरण 5 2 प्लस 5 ताले केता आसीबो एटा 50 माइनस 2 48 इज योर राइट आंसर समस्त आंसर आछि ऑप्शन 2 48 आसीबो हेर राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इफ ए रो अर्थ होची डिवीजन ए रो अर्थ कोन डिवीजन बी डिनोट्स प्लस बी रो अर्थ होची प्लस सी डिनोट्स माइनस सी रो अर्थ होची माइनस डी डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन डी रो अर्थ होची मल्टीप्लिकेशन ताले 24a माने 24 हरण
6 टी रो अर्थ होची गुणन 4 टी रो अर्थ होची एठारे प्लस 9 टी रो अर्थ होची माइनस 8 ओके बरह गुमी पे दैट इज केते आसीबो एटा 4 आसीबो 4 गुणन 4 प्लस 9 माइनस 8 4 चौ केते 16 प्लस 9 माइनस 8 बरह गुमी पे 16 9 25 माइनस 8 आंसर विल बी 70 आसीबो आपनकर राइट आंसर ऑप्शन 2 17 इज योर राइट आंसर समस्त आंसर आसी 17 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 which of the following has the not same meaning कहंतु not same meaning आसीबो sky stars ठीक अछि इट मींस स्काई रे आपनकर स्टार्स माने कोन होंती appears होंती मून प्लैनेट्स मून गोटे कोन आपनकर हेवनली बॉडी प्लैनेट्स आर आल्सो हेवनली बॉडी तो एटा सेम मीनिंग आसु नै देखिबा स्टेडियम प्लेयर्स स्टेडियम रे प्लेयर्स माने खेलंती यूनिवर्सिटी रे स्टूडेंट्स माने कोन करंती पाठ पढंती इट मींस ऑप्शन 2 ठीक लागछ ऑप्शन 2 रो सेम मीनिंग आसु नाही ऑप्शन 2 हेबो यार राइट आंसर ओके मून प्लैनेट्स हबो राइट आंसर नेक्स्ट फाइंड आउट वन आउट एनालिसिस सर्च कंक्लूजन इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस रो एंड पॉइंट होची कंक्लूजन आपण सर्च करिवे सही कंक्लूजन रे पहुंचीबे इन्वेस्टिगेशन करिवे सही कंक्लूजन रे पहुंचीबे इट मींस कंक्लूजन होची आपनकर फाइनल स्टेज ऑफ ऑल दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 ऑड वन आउट वी कैन से नेक्स्ट डायरेक्शन रो क्वेश्चन रहिछि ट्राई करबा क्वेश्चन नंबर 67 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 67 if A stands on his head with his face towards north in which direction will his left hand point देखंतु एठी को गला A stands on his head माने कोन ऑपोजिट हिजो नॉर्मली आमे जानंती दैट इज जदी से नॉर्थ को फेस करिछि जदी से नॉर्थ को फेस करिछि देन एटा कोन आसीबो तार राइट हैंड साइड एटा आसीबो लेफ्ट हैंड साइड ओके इट मींस कोन एटा रहइबो आपनकर ईस्ट डायरेक्शन रे राइट हैंड साइड देन वेस्ट डायरेक्शन रे रहइबो लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मली बट जेहेतु से कहिछि हेड तो एटा कोन हिजबो उल्टी जिवो ताले उल्टी गले कोन हिजबो एटा लेफ्ट हैंड साइड हिजबो एटा राइट हैंड साइड हिजबो ताले इन व्हिच डायरेक्शन इन इज लेफ्ट हैंड पॉइंट लेफ्ट हैंड ता को डायरेक्शन रे रहइबो ईस्ट डायरेक्शन रे रहइबो दैट इज योर राइट आंसर ईस्ट डायरेक्शन हबो यार राइट आंसर बुझियला ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 ट्राई करिबा डायरेक्शन रो क्वेश्चन हरि ट्रैवल्ड 17 किलोमीटर टू द ईस्ट नगर एठा नवा रेफरेंस पॉइंट एठु गला से 17 किलोमीटर ईस्ट को गला he turned left एठारु से कोन करछि लेफ्ट टर्न करछि एंड 15 किलोमीटर गला that is से लेफ्ट टर्न करिकि again he turned left and went 17 किलोमीटर पुनी थरे से कोन कला 17 किलोमीटर गला लेफ्ट टर्न करिकि ताहाले हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट रु से केते दूरता रे अछि देखंतु स्टार्टिंग पॉइंट रु से 15 किलोमीटर दूरता रे अछि ऑप्शन 3 15 किलोमीटर हेबो एहरो राइट आंसर बुझियला केते किलोमीटर 15 किलोमीटर मन रखंतु नेक्स्ट आपनकर सीरीज रो प्रश्न रहिला 10 22 46 94 देन यहाँ पर कोन आसीबो 10 22 46 94 ओके 10 रहिछि देन नेक्स्ट नंबर रहिला 22 नेक्स्ट नंबर रहिला 46 नेक्स्ट नंबर 94 देन केते आसीबो पचारिछि देखंतु 10 22 केते बेले हला 10 मल्टीप्लाई 2 करिवा दैट इज केते आछि 20 आछि प्लस एथरे 2 हला दैट इज 22 आसिला राइट सेमिति 22 रे मल्टीप्लाई 2 करंतु केते आछि 44 प्लस 2 दैट इज 46 आसिला 46 आसिला कि नो सेमिति 46 मल्टीप्लाई 2 दैट इज केते 92 plus 2 that is 94 asla then 94 multiply 2 that is kete hobo 94 multiply 2 88 means 18
188 plus 2 that is 190 is your right answer. एठार केता आसीबो 190 is your right answer. Option 3 होबो right answer. It means ए सीरीज टी आपनकर गुणन 2 plus 2 ए लॉजिक अनुसार काम करूची गुणन 2 plus 2. Okay, option 3 is your right answer. Next question number 70 try करिवा 110 रहिला 132 156 देन केते आसीबो देन 210 कथा को जाईछि ट्राई करंतु ट्राई करिवा देखंतु 110 टा 132 हला माने केते बढ़िला एठारे 22 बढ़िला पुनी 132 टा कोन होची 156 होची माने एठारे 24 बढ़ुची अच्छा 22 24 पर एठारे देखा 26 बढ़ाइबा 26 बढ़ांतु देखिबा केते आसी 156 प्लस 26 182 ताले एठी जदि आपनकर 28 पडुची ताले लॉजिक ता काम करबो ठीक होची 210 आसी ताले 182 इज योर राइट आंसर. ऑप्शन 3 182 इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 71 1 रहिला देन 2 देन 4 देन 8 देन कोन हबो पचाच ए सीरीज टी को फिल करबा देखंतु 1 पर 2 टू जदि सेम नंबर रहउची आपण अल्टरनेटिव नंबर को कैरी करिवे 1 कोन हला 2 हला एठारे 2 कोन होची 4 होची इट मींस कोन 1 रे मल्टीप्लाई 2 हला देन 2 टा आपनकर कोन होची 8 होची एठारे मल्टीप्लाई 4 हला सेमिति 2 टा कोन होची 4 हला माने मल्टीप्लाई 2 होची तो एठारे मध्ये हम कोन करबा मल्टीप्लाई 4 करबा तो 4 into 4 16 is your right answer. Option 3 16 हबो यार राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 कोडिंग एंड डिकोडिंग रो प्रश्न इफ डी जदि आपनकर 4 हुए डी रो पोजीशन वैल्यू केते 4 बीएडी जदि आपनकर 7 हबो ताली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंड बीएडी देखंतु बी रो होची 2 प्लस ए रो होची 1 प्लस डी रो होची 4 दैट इज केते आसिला 7 आसिला सेमिति एंड रो पोजीशन वैल्यू को नै कि प्रत्येक लेटर रो पोजीशन वैल्यू को नै कि आपण ऐड करिवे ए रो केते 1 एन होची केते 14 टी होची आपनकर 20 दैट इज 35 इज योर राइट आंसर. ऑप्शन 3 35 इज योर राइट आंसर. आंसर आसी समस्तंगर. नेक्स्ट इफ ए जदि आपनकर 26 हुए सन जदि आपनकर 27 हुए ताले सीएटी कोन हबो एठारे कोडिंग एंड डिकोडिंग रो केउ लॉजिक काम करछि देखंतु if a equals to 26 son equal to 27 ताले CAT टा केते हबो से पचारछि a रो वैल्यू 26 केते बेले हबो a रो ऑपोजिट होची कोन z एंड ए z रो वैल्यू होची 26 सेमिति s रो ऑपोजिट कोन हबो s रो ऑपोजिट कोन हबो h u रो ऑपोजिट कोन हबो f n रो ऑपोजिट कोन हबो m ऐड करिवा h रो ऑपोजिट होची 8 plus 6 plus 13 814 plus 13 that is 27 आउची. सिमिलरली ए लॉजिक टा c रो ऑपोजिट कोन हिजबो x a रो ऑपोजिट होची z t रो ऑपोजिट होची t रो ऑपोजिट कोन आसीबो g आसीबो तो ओके x टा होची आपनकर केते x टा होची x केते आसीबो x होची 24 प्लस z होची 26 प्लस 7 ऐड करंतु 24 26 प्लस 7 केते आसीबो एटा आपनकर 57 इज योर राइट आंसर. ओके 57 ठीक अछि 57 इज योर राइट आंसर. समस्त आंसर आसी 57 ऑप्शन 2 ताले केट रो नंबर केते आसीबो 57 आसीबो. ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 ट्राई करबा कोडिंग एंड डिकोडिंग रो प्रश्न इफ PREMA को कोड करा गला 96731 ताले RAMA रामा बी रिटर्न इन द कोड ताले रामा को कोन लिखा जिवो कोन एठारे देखंतु एठारे मध्ये आपन को देखिबार अछि केउ लॉजिक काम करूची p रो तो पोजीशन वैल्यू होची 16
आर रो पोजीशन वैल्यू होची 18 सेमिति आपण जदी 16 ऐड करिवे एटा भी हो नाही किबा एटा जदी आपण हाफ करिवे दैट इज आल्सो हो नाही किबा यार रूट मध्ये काम करू नाही मींस एटारे डायरेक्ट वैल्यू गिवन अछि p रो डायरेक्ट वैल्यू होची 9 r रो डायरेक्ट वैल्यू केते दैट इज 6 e रो होइजो आपनकर 7 m रो होची 3 एंड a रो डायरेक्ट वैल्यू होची दैट इज 1 ताले r a m a कहिची r केते हो देखंतु r कहूची r होची 6 a होची आपनकर 1 a केते आसीबो 1 आसीबो m आसीबो आपनकर 3 m होची 3 पुनी थरे a आसीबो 1 ओके 6131 is your right answer option 2 6131 is your right answer समस्त आंसर आसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रो प्रश्न रहिछि ट्राई करंतु स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रो क्वेश्चन रहिछि कोन कहला एठी ऑल फिलोसोफर आर मेन सॉक्रेटिस वाज ए फिलोसोफर तो एटा को वेन डायग्राम रे दर्शाइबा ऑल फिलोसोफर आर मेन अटंती ठीक अछि समस्त फिलोसोफर कोन अटंती मेन अटंती समस्त फिलोसोफर मेन अटंती एंड सॉक्रेटिस जने फिलोसोफर अटंती माने कोन सॉक्रेटिस होचन जने फिलोसोफर सॉक्रेटिस जने कोन फिलोसोफर ताले सॉक्रेटिस वाज ए मैन हे परिबे सॉक्रेटिस जने फिलोसोफर फिलोसोफर ता मैन मीन सॉक्रेटिस जने मैन हे परिबे ओमेन कैन नॉट बिकम फिलोसोफर एठार को गला कैन नॉट माने एठी ओमेन स्टेटमेंट रे गिवन नाही दैट इज आपनकर कंक्लूजन मध्ये ट्रू रहउची ताले एटा मध्ये फॉलो करिवो ऑप्शन 4 हबो राइट आंसर बोथ आर वैलिड हे परिवो बोथ आर वैलिड होची हेरो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 ट्राई करिवा आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन टॉप इज 6 जदी यार टॉप रे 6 रहइबो यार बॉटम रे कोन आसीबो ट्राई करन which option is your right answer identify the number at the bottom when top is 6 okay आपण को कोन करा दैछि एठारे डाइस रो डिफरेंट फेस गिवन अछि ओके माने गोटे डाइस रो से कहूची टॉप रे जदी 6 रहइबो ताले तार ऑपोजिट रे कोन रहइबो which option is your right answer एठारे देखंतु एटा रहला आपनकर फिगर 1 ओके माने फेस 1 फेस 2 फेस 3 एंड फेस 4 आपण जदी एठारे कंपैरिजन करिवे फेस 1 एंड फेस 3 को ताले एठी कोन कॉमन अछि देखंतु 3 2 6 3 2 1 3 पर 2 आसिला 2 पर 6 आसिला ठीक अछि इट मींस एठारे 3 2 कॉमन अछि एठारे आल्सो कोन 3 2 कॉमन अछि इट मींस 6 रो ऑपोजिट रे दैट इज कोन क्लॉकवाइज तो 6 रो ऑपोजिट रे कोन आसीबो 1 आसीबो 6 रो ऑपोजिट रे कोन आसीबो 1 आसीबो आपनका राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर 6 रो ऑपोजिट रे कोन आसी 1 आसी समस्त आंसर आसी 6 रो ऑपोजिट रे 1 आसीबो अदरवाइज जदि आपण ऑप्शंस अनुसार मध्ये देखिबे ऑप्शंस अनुसार जदि मध्ये देखिबे दैट इज ऑप्शंस अनुसार मध्ये करा जाय परिबो ठीक अछि 6 रो ऑपोजिट रे 1 आसी जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 फाइंड आउट द नंबर ऑपोजिट टू 3 3 रो ऑपोजिट रे कोन आसीबो कोन 3 रो ऑपोजिट रे कोन आसीबो क्वेश्चन नंबर 77 3 रो ऑपोजिट रे कोन आछी आपण 1 कॉमन और 2 कॉमन मेथड को नहीं करि परिबे देखंतु एठारे 3 रहिला एठारे कोन अछि 3 अछि 3 रो ऑपोजिट रे कोन आछी से पचारिछि प्रथम कथा होची 1 किबा 2 आसीबो ऑप्शन डी कटिला ओके एंड आपनकर 6 आसीबो 4 आसीबो और 5 आसीबो व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर 3 रो ऑपोजिट रे 1 2 कॉमन अछि देखंतु एठारे मध्ये 1 2 कॉमन अछि एटी मध्ये कोन 1 2 कॉमन अछि तो 3 रो ऑपोजिट रे
5 आसीजिवो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ओके समस्त आंसर आछि ऑप्शन सी हो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 मेल्स फादर्स एंड एडवोकेट्स याको वेन डायग्राम रे रिप्रेजेंट करबा मेल्स फादर्स एंड एडवोकेट्स गिवन वेन डायग्राम अनुसार व्हिच ऑप्शन हेबो यार राइट आंसर ट्राई करंतु वेरी सिंपल जने मेल टा कोन आसीबो इठी कॉमन आसीबो मेल फादर हे परिबो मेल एडवोकेट हे परिबो नो डाउट मेल फादर हे परिबो मेल एडवोकेट हे परिबो बट फादर मींस दैट इज 100% मेल फादर कोन 100% मेल बट मेल एडवोकेट्स हे परिबो ठीक अछि किछि आंसर सही अर्थ रे ऑप्शन 1 हिज आपनकर राइट आंसर ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर क्लियर ओके फादर कोन हे परिबो मेल हे परिबो बट एडवोकेट टा फादर भी पारे एडवोकेट टा मेल भी पारे सही सेंस रे आपण ऑप्शन 1 को चूज करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 रोज फ्लावर एंड लीव्स को वेन डायग्राम रे शो करंतु रोज टा कोन हे परिबो फ्लावर हे परिबो किंतु रोज टा फ्लावर बट लीव्स टा अलगा आसी जिवो दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फिगर आंसर फिगर रे आपनकर एई फिगर टा जो आंसर फिगर रे फिट हबो एम्बेड अछि एम्बेड करि परिबा और हिडन अछि ट्राई करंतु एई फिगर टा आपनकर केउ आंसर फिगर रे अछि आइडेंटिफाई करिबा क्वेश्चन नंबर 80 व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन 1 देखंतु ऑप्शन 1 अनुसार जो देखिबा ताले ऑप्शन 1 कटुचे ऑप्शन 2 मध्ये कटिबो ऑप्शन 3 एटा जदि रहिबो ताले ऑप्शन 3 और 4 व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर ऑप्शन 3 एंड 4 मध्ये रे देखंतु आई थिंक ऑप्शन 3 मध्ये कटुची ऑप्शन 4 ठीक हबो देखंतु एटा रहिची एटा उडा आसला एमिति ओके माने एमिति उडा आसला देन दुइटा लाइन कनेक्ट होची देन आपनकर एटा very creative so option 4 is your right answer option 4 देखो तो एटा को आपण क्लोजली देखिबे दैट इज ऑप्शन 4 as your right answer देन जिबा हमें मैथ रो क्वेश्चन रहिची ट्राई करबा क्वेश्चन नंबर 81 एवरेज रो प्रश्न रहिची ट्राई करो the average of 6 numbers is 9 if the average of first 5 of this number is 8 what is the sixth number 6 टी संख्या रो एवरेज हाराहारी केते 9 ताले सम टा केते आसीबो 54 आसीबो एथिरो पांचटी प्रथम पांचटी संख्या रो हाराहारी होची 8 ताले एवरेज 8 सम केते आसीबो 40 आसीबो सिक्स्थ नंबर टा केते आसीबो 54 minus 40 14 is your right answer option D हबो यार right answer okay otherwise आपण एमिति मध्य करि परिया देखंतु the average of 6 number is 9 माने एटा होची ओवरऑल एवरेज plus average of first 5 number is 8 माने overall average minus 8 multiply आपनकर that is first 5 number then answer has jiba apno directly 9 plus 1 into 5 that is 9 plus 5 which is 14 is your right answer आपण एटा भी करि परिबे एटा भी करि परिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 ट्राई करंतु an amount rupees 1050 is distributed among A, B and C in the ratio 2:5:8 what is the difference between the share of C and B C and B रो difference केते से पचारिछि रेशियो रो प्रश्न केमिति करिवा देखंतु A is to B is to C रो रेशियो केते 2:5:8
8 ताले एटा टोटल गले केते आसी 5 2 7 8 15 15 यूनिट गिवन अछि दैट इज 1050 तो एटा 15 रो केते टाइम 15 सपना देन 15 शून्य 70 टाइम 15 रो 70 टाइम हेले ताले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ C and B C and B रो डिफरेंस केते दैट इज 8 minus 5 3 तो 3 रो मध्य 70 टाइम हबो दैट इज योर आंसर 210 इज योर राइट आंसर ताले C and B शेयर रो डिफरेंस केते 210 is your right answer. Option C is your right answer. Okay. Next question, question number 83 try करिबा. Partnership रो question try करंतु partnership रो question which option has your right answer? A and B enters into a partnership investing rupees 15,000 and 20,000 respectively. That is तांकर capital. प्रथमे हमें बाहर करिया capital रो ratio 1 year रो कहिछि एवं सेमानकर profit earned that is 14,000 कहिछि. What will be the share profit of A and B बाहर करिया पई कहिछि देखंतु A एवं B तो सेमानकर कैपिटल रो रेशियो टा केते प्रथमे बाहर करंतु गोटे होछि 15,000 B रो होछि 20,000 ताले 0 को 0 कटिला that is 5 3 की 15 5 4 20 that is profit ratio टा आसीबो आपनकर 3:4 and सम कले 7 आसला तो ई 7 यूनिट रो वैल्यू गिवन अछि 14,000 दैट इज केते टाइम्स एटा होछि 2,000 टाइम एटा होछि 2,000 टाइम ओके ताले 3 टा केते हिजबो 3 मल्टीप्लाई 2,000 दैट इज 6,000 मल्टीप्लाई एटी कोन हिछि 2,000 अछि एमि 4 टा मध्ये कोन हबो multiply 2,000 हिजबो that is 8,000 is your A and B रो कोन एटा प्रॉफिट रो शेयर आसीगला आंसर विल बी ऑप्शन A 6,000 B 8,000 समस्त आंसर आसीला नो डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 ट्राई करंतु if the cost price of 24x is equal to the selling price of 20x then what would be the percentage of gain or loss in the transaction? Very simple. 24 टी एग रो cost price प्रश्न अनुसार equals to 20 टी एग रो selling price. No doubt. ताले cost price by selling price करिवा that is केते आसीबो 20 by 24 आसीबो. No doubt देखंतु 20 टंका किना बेले 24 टंका होची बिका ताले 4 टंका रो कोन होची लाभ होची बा 4 यूनिट रो लाभ होची केते रे 20 रे लाभ होची मल्टीप्लाई 100 0 को 0 कटिला देन 2 2 4 दैट इज 20% कोन होची एठारे प्रॉफिट होची 20% प्रॉफिट ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर 20% प्रॉफिट एज योर राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 A and B complete the job in 16 days, while A, B, C can complete it in 12 days. In how many days C alone can finish the job? A एवं B एकाठी कामटी को केते दिन रे सारुचंती 16 दिन रे जदि समाने A, B एवं C जोग दबो कामटी 12 दिन रे सरुची ताले C एकाकी सेही कामटी को केते दिन रे करिवो से प्रश्न पछेछि ताले एलसीएम बाहर करंतु गोटे टोटल वर्क यूनिट 16 एवं 12 रो एलसीएम केता आसीबो 48 होची दैट इज टोटल वर्क यूनिट ताले A plus B रो एफिशिएंसी केते A plus B रो एफिशिएंसी होची 3 एवं A plus B plus C रो एफिशिएंसी होची 4 देखंतु A plus B जदी 4 हबो A plus B जदी 3 हेबो ताले C रो केते वैल्यू आसीबो 4 minus 3 1 आसीबो किनो C रो एफिशिएंसी केते आसीबो 1 आसीबो ताले C रो एफिशिएंसी होची 1 एफिशिएंसी रे 48 यूनिट रो काम से केते दिन रे करिवो 48 by 1 that is 48 days 48 days is your right answer option D है हमारा right answer next question number 86
two taps can fill a tank 10 hours and 15 hours गोटे 10 hours अन्यटी 15 hours रे fill होच ताले से टैंक रो कैपेसिटी केते एलसीएम बाहरिबो दैट इज 10 और 15 रो एलसीएम होची 150 यूनिट रो दैट इज कैपेसिटी ताले जोटा 10 आवर रे फिल होची तार एफिशिएंसी केते से 15 एंड जोटा 15 आवर रे फिल होची तार एफिशिएंसी होची 10 ओके देन एटा ऐड करले केते आछी दैट इज 25 होची मानकर मोट एफिशिएंसी से पचारि जे if both taps are opened together how much time will that take to fill the tank मान ताहले 25 यूनिट एफिशिएंसी रे 150 यूनिट रे एफिशिएंसी को केते समय रे फिल करिवे 150 by 25 that is 6 hour is your right answer केते घंटा 6 घंटा समय लागिवो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 ट्राई करंतु A train travel 300 km 2.5 hours रे and 450 km in 5 hours रे find out the average speed of the train average speed पचार that is total speed by sorry average speed पचार ना total distance by total time करंतु 300 km 450 km that is केते 750 km एटा होची total distance 2.5 hour plus 5 hour that is 7.5 hour होची total time एटा केते आसीबो 750 by 7.5 एटा जदि आपण कटाकटी करिवे 100 किलोमीटर पर आवर आसीबो आपन राइट आंसर एवरेज स्पीड ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर 100 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 बोट एंड स्ट्रीम रो क्वेश्चन ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 88 बोट एंड स्ट्रीम रो क्वेश्चन ट्राई करिवा क्वेश्चन नंबर 88 A boatman can row 3 km against the current of the stream in 30 minutes ठीक अछि 3 किलोमीटर को अगेंस्ट द करंट रे से कोन करछि 30 मिनट समय अनुछि एंड रिटर्न करूछि से 3 किलोमीटर को दैट इज 20 मिनट्स से फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द करंट ताले स्पीड ऑफ द करंट केते हो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रखो एठी कांसेप्ट पडिबो दैट इज ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 88 व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर अपन डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करि परिबे ओके स्पीड ऑफ द करंट दैट इज कोन हबो डिस्टेंस बाय 2 देन 1 बाय टाइम लागुची अपस्ट्रीम रे माइनस आपनकर टाइम लागुची डाउनस्ट्रीम रे गुणन जेहेतु एठी कोन अछि दैट इज मिनट रे अछि घंटा रे कन्वर्ट करबा गुणन 60 तो ये फार्मूला यूज करी मध्य करा जाय परिबो अदरवाइज आपण 30 मिनट को घंटा रे कन्वर्ट करिवे ठीक अछि हाफ आवर आसीबो 0.5 आवर तो 20 मिनट को आपण पुनी थरे घंटा रे कन्वर्ट करिवे ठीक अछि 20 मिनट को घंटा रे कन्वर्ट करी की देन मध्य आपण बाहर करि परिवे ओके ट्राई करंतु व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर जदि हम एठारे फार्मूला यूज करिवा डिस्टेंस अनुसार जदि फार्मूला यूज करिवा देखंतु 3 by 2 हबो ओके हमें डायरेक्ट बाहर करबा देन 1 by अपस्ट्रीम टा केते अगेंस्ट द अपस्ट्रीम 1 by 30 मिनट्स माइनस 1 by 20 मिनट्स इनटू ओके एटा पुनी हमें घंटा रे बाहर कर दबा 60 तो 60 ले केते असला एटा 3 by 2 दैट इज आपनकर 60 रहइबो एंड एठारे आसीबो 2 minus 3 multiply 60 तो 60 को 60 कटि जीवो 3 by 2 multiply 2 minus 3 that is 1 रेशियो एटा minus 1 रेशियो तो एटा आसीबो आपनकर 3 by 2 that is 1.5 multiply minus 1 तो एटी माइनस रे काहे आसला वैल्यूटा माइनस रे एथि पे आसला आपनकर डाउन स्ट्रीम टा कोन रहउची अधिका रहउची अपस्ट्रीम रू that's why okay otherwise a value should be considered in positive so 1.5 into minus 1
minus 1.5 that is eta apanor kono finally mode रे रहइबो ना माने complete formula टा apanor mode रे रहइबो that's why 1.5 kilometer is your right answer 1.5 kilometer per hour is your right answer option D हबो यार right answer clear otherwise आपण 30 minutes को घंटा रे कन्वर्ट करिवे पुनी थरे 20 मिनट को घंटा रे कन्वर्ट करी मध्ये आपण बाहर करि परिबे ठीक अछि तो एटा टिके फास्ट रहइबो for your calculation option D समस्त आंसर आछे नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 89 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 89 ट्राई करिवा which option is your right answer the ratio of speed of car truck and bus car then truck and bus रहला केते अछि 5:2:3 the average speed of the car truck and bus together 60 average speed कथा कहिछि एठारे ओके भलो आर बुझंतु average speed माने कोन 5 plus 2 plus 3 by 3 टा होछि आपनकर 60 that is केते 5 2 7 3 10 by 3 टा होछि 60 10 by 3 होछि 60 ताले 1 टा केते आसीबो एठी 60 multiply 3 by 10 0 को 0 कटिवो 1 रो वैल्यू आसला 18 1 रो वैल्यू केते आसला 18 ताले कोन प्रश्न पछारछि what is the average speed of car and truck ro average speed केते हबो 5 plus 2 by car and truck 2 unit 2 हबो that is केते 7 by 2 which is 3.5 तो 1 टा जदी 18 हबो 3.5 टा केते हबो 3.5 into देखो तो एटा 18 multiply 18 तो एटा केते आसीबो 63 kilometer per hour is your right answer which option A 63 kilometer per hour is your right answer next question number 90 try करंतु zinc and copper are in the ratio 6:5 in 220 gram of an alloy zinc आउ copper ratio टा केते अछि 6:5 अछि how much of copper can be added so as to make it the ratio 5:6 हबो एथिरे आपण copper को केते ऐड करिवे 5:6 हबो मींस जिंक टा कांस्टेंट रहइबो त हम जिंक टा को सेम करिवा जदि जिंक टा को सेम करिवा दैट इज केते एथिरे 5 मल्टीप्लाई करंतु एथिरे 6 मल्टीप्लाई करंतु दैट इज 30:25 and एटा आपनकर 30:36 30 plus to 25 that is होची 55 होची मोट 55 टा होची आपनकर 220 ताले 1 यूनिट टा केते हिजबो 220 by 55 that is केते 220 by 55 होची आपनकर एटा कटाकटी करंतु एटा कटाकटी कले केते आसीबो 4 यूनिट आसीबो 1 यूनिट टा जदी 4 हबो ताल देखंतु जिंक टा तो आपनकर कांस्टेंट रहिला से कहिछि how much gram of copper can be added प्रथमे 25 थिला वर्तमान 36 हला तो एठी केते ऐड हला 11 यूनिट रो ऐड हला ताले 1 यूनिट टा जदी 4 हेबो 11 यूनिट टा केते हिजबो मल्टीप्लाई 4 दैट इज 44 ग्राम इज योर राइट आंसर ऑप्शन बी 44 ग्राम इज योर राइट आंसर ताले जदी आपण 44 ग्राम रो कॉपर को जदी ऐड करिवे सेथिरे तार रेशियो टा 5:6 पे आसी जिवो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर समस्त आंसर आछि नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 91 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 91 ट्राई करिवा प्रेजेंट एज ऑफ अर्पिता एंड सोनाली आर इन द रेशियो 7:9 अर्पिता और सोनाली रो वर्तमान बयस रो अनुपात होची 7:9 3 इयर हेंस 3 वर्ष परे सेमानंगर बयस रो अनुपात केते होची 4:5 होची that is 3 वर्ष परे सेमानकर डिफरेंस ताले सोनाली रो वर्तमान बयस केते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाहर करिवा केमे देखंतु 7 5 35 4 9 36 35 36 भीतर डिफरेंस केते 1 देन 1 यूनिट होची 4 3 की 12 5 3 की 15 12 एवं 15 भीतर डिफरेंस केते 3 1 यूनिट ता जदी 3 हबो सोनाली रो प्रेजेंट एज केते 9 यूनिट that is 9 unit टा केते हिजबो 9 into 3 that is 27 years केते वर्ष सोनाली रो वर्तमान बयस
27 वर्ष ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 ट्राई करिए in what time rupees 1500 bill becomes 1815 at the rate of simple interest of 7% per annum से कहूची 1500 टंका होची आपनकर प्रिंसिपल दैट इज कोन होची 1815 टंका होची अमाउंट रे ताले एठारे इंटरेस्ट केते मिलुची दैट इज 315 टंका एटा होची प्रिंसिपल एटा होची अमाउंट एटा होची आपनकर सिंपल इंटरेस्ट एंड आपनकर 7% होची रेट ऑफ इंटरेस्ट ताले एठारे पचारची टाइम केते पचारची इजीली बाहर करी हबो टाइम टा केते आसीबो 1500 होची प्रिंसिपल गुणन 7 होची रेट ऑफ इंटरेस्ट मनवर टाइम को x नबा बाई 100 करबा ठीक अछि इक्वल टू 315 होची रेट ऑफ इंटरेस्ट एटी x रो वैल्यू बाहर करंतु जहा आसीबो दैट इज योर राइट आंसर x रो वैल्यू जहा आसीबो दैट इज योर राइट आंसर ओके देखंतु एटी 0 को 0 कटि जिवो that is 105x equal to 315 तो x रो वैल्यू केता आसीबो 315 by 105 which is 3 years is your right answer 3 years समस्त आंसर आछि ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 93 which option is your right answer What will be the difference between compound interest and simple interest on rupees 1200 for 2 years at 5% per annum? आपण डायरेक्ट फार्मूला यूज करिवे P into R by 100 रो स्क्वायर बिकॉज़ इटा 2 ईयर गिवन अछि ओके देन देखंतु प्रिंसिपल केते 1200 गुणन रेट ऑफ इंटरेस्ट होची 5 by 100 रो स्क्वायर करंतु दैट इज आपनकर आंसर आइसो केते आछैटा 1200 गुणन दैट इज 5 5 25 बाय 10000 एठारे कोन हबो एठारे आपनकर दुईटा 0 को दुईटा 0 कटि जिवो दैट इज आई थिंक रुपीस 3 आसीबो 3 रुपीस आसीबो आपनकर डिफरेंस ता एटा कोन CI माइनस SI रो डिफरेंस दैट इज CI माइनस SI रो डिफरेंस रो फार्मूला तो CI माइनस SI रो डिफरेंस केते आसी गला 3 रुपीस आसी गला आपनकर राइट आंसर ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 ट्राई करिवा which of the following number will fill the gap in the series 1 अछि 1 पर 9 अछि 9 पर 25 49 देन केते आसीबो देन 121 कोन अछि देखंतु 1 9 देन 25 अछि देन अछि 49 देन केते आसीबो देन 100 देखंतु एटा 1 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर माने ऑड नंबर 5 रो स्क्वायर ऑड नंबर 7 रो स्क्वायर ऑड नंबर 7 पर ऑड नंबर कोन आछि 9 आछि 9 रो स्क्वायर 81 करंतु 9 पर ऑड नंबर होची 11 रो स्क्वायर 121 so 81 is your right answer next question number 95 try करियो the product of two number is 96 product माने मनगर संख्या दुटी x into y 96 नबा एवं सेमानगर डिफरेंस x minus y होची 10 ताहाले सम ऑफ द नंबर केथा हो देखंतु ताले संख्या दुईटी आपनकर गोटे 16 अन्यटी 6 करि परिया देखंतु 16 6 को 96 16 minus 6 10 ताले 16 plus 6 केते आछि सम ता 22 आसीबो आपनकर राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 30 माने x plus y होची आपनकर 30 एवं सेमानकर डिफरेंस माने x minus y होची केते 6 फाइंड द रेशियो ऑफ द टू नंबर ताले इडी y को y इडी हमर कटिबो 2x टा केते आसीबो दैट इज 36 x रो वैल्यू जदी 18 आसिला x रो वैल्यू को जदी आपण जे कोनोसी एक इक्वेशन रे पुट करिवे ताले y रो वैल्यू केते आसीबो दैट इज 12 आसीबो ताले सेमानकर रेशियो टा केते x is to y that is 18 is to 12 that is 6 3 6 2 3 is to 2 is your right answer option C hobo यार right answer
What is the sum of 6 plus 7 plus 8 up to 16 पर्यंत यार सम बाहर करिवार अछि केमिति बाहर करिवा देखंतु आमे प्रथमे कोन करिया 1 to 16 कंसीडर करिया आमे जानि n into n plus 1/2 एटा कोन कंजुगेटिव टर्म्स रे अछि तो 16 गुणन 17 by 2 minus 1 to 5 include अछि ताले 5 into 6 by 2 करंतु 2 8 रे कटिवो 2 3 रे कटिवो ताले 17 गुणन 8 दैट इज केते आछि 1 17 गुणन 8 136 minus 15 136 minus 15 121 is your right answer समस्त आंसर आछि ऑप्शन सी आसी जीवो हेरो 6 plus 7 plus 8 up to 16 पर्यंत सम रो वैल्यू केते आसीबो 121 n into n plus 1/2 रो फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 ट्राई करंतु if the perimeter of an equilateral triangle is 24 centimeter perimeter equilateral triangle माने कोन 3a टा गिवन अछि आपण 24 मीटर सेंटीमीटर नो मीटर देन यार एरिया केते हो ताले a टा केते बाहर करंतु ए माने कोन गोटे साइड 24/3 ए आसी गला आपनकर 8 मीटर एरिया बाहर करिवा एरिया होउची √3/4 बाहुर स्क्वायर दैट इज √3/4 गुणन 8 गुणन 8 ठीक अछि ताले √3/4 4 2 रे कटिवो ताले √3 गुणन 16 तो 16 √3 meter square is your right answer option D habo right answer 16 √3 meter square is your right answer next question number 99 try kariyo the area of a rectangular field hoji 18000 meter square area ta kono 18000 meter square tale the ratio of its length and breadth hoji 5:4 5:4 माने कोन मनकर 5x ने भी अन्यटा 4x ने भी find out the length and breadth of the field respectively तो एटा केते हबो length into breadth होजी 5 को 20 x square which is given 18000 मीटर स्क्वायर ओके तो x स्क्वायर ता केते हबो एठी 18000 by 20 कले दैट इज 0 को 0 कटिवो 900 आसीबो तो x रो वैल्यू केते √900 हबो दैट इज 30 आसीबो x रो वैल्यू जदी 30 आसीला ताले 5x ता केते हिजबो 150 हबो 4x ता केते हबो 120 आसीबो तो 150 मीटर एवं 120 मीटर आसीबो यार लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 हाउ मेनी स्मॉल cubical blocks of side 6 cm can be cut from a cubical block whose each side measures 24 cm try करन how many small cubical blocks but 6 cm रो आपण बाहर करि परिबे पुरे 24 cm रे ताले कोन होबेटा a cube 24 into 24 into 24 by 6 into 6 into 6 करंतु दैट इज केते आसीबो 6 चौक 24 6 चौक 24 6 चौक 24 4 रो क्यूब होची 64 इज योर राइट आंसर हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स 64 टा स्मॉल क्यूब ऑप्शन है हबो यार राइट आंसर ओके तो याथिला आपनकर मॉक टेस्ट 2 आउट ऑफ 100 आपनकर स्कोर केते रहउची आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे आपण एही पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे ओके क्लास टी को लाइक करंतु एंड शेयर करंतु आई होप ए क्लास टी आपण मानक पई बहुत यूजफुल हबो ए मॉक टेस्ट टी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास